So welcome everybody. Now we'll be starting the webinar. As you all know, future market, I believe most of you must be trading in future market and some of you might be new in the future market. But as you all know, future market has always been seen as the place where retail investor is not always making money. So why the retail investor is not making money in the future market? What is that inside the future market which prevents the retail trader to make money in the future market, and how a trader can start making money in the future market would be the broad agenda for today's webinar. Okay. So now as you all can see in the next slide, this is the next slide. As you all can see, the broad points which we will be covering in this particular webinar. So we'll first be understanding the basics of derivative. I mean, what a derivative contract is, how that contract came into existence, and how and why this contract was needed in these markets. We'll be understanding the future contract, what a future contract is, need of the future contract, contract specifications, open interest analysis, and then we'll be taking your queries. So the next slide. Now understanding what a derivative contract is. I believe you all are trading in stock markets and must have bought a share in your life. So a derivative contract is a contract which derives its value from an underlying contract. For example, a very simple example, if there is a cricket match going on and I have bet on that particular cricket match. So my bet is a contract which I have done with a counterparty, and there could be an outcome to that particular bet. So that bet is a derivative contract, and the underlying asset is that particular activity, which is the cricket match which is going on in the at that particular place. So the similar way, if we create a bet on an index or on a commodity without trading directly in the commodity. So let's say I'm putting a bet on stocks, commodity, or forex, or any other particular underlying asset. That is a derivative contract. So derivative contract is a hybrid contract which is derived from an underlying asset. Now let us very clearly understand the differences between cash market and derivative market. Now as you can see, we have numbered many differences between both the markets. The first point states that delivery. In future market is a speculative paradise. When initially the market started, the only problem a literal trader felt was that he has to take a delivery or give the delivery. So he could not short sell a particular trade. So in future market, there is no delivery. In cash market, if he takes a positional trade, he gets the delivery. As you are not owning that particular share, so you do not have to pay the full margin. You pay margin from 10 to ranging from 10 to 20%, and a mark to market margin is paid on that particular contract in the future market. But in delivery market, full payment have to be made if you buy that particular contract on a T+2 basis. BTST and STBT both are allowed in the future market, but only BTST is allowed. Now what is BTST and STBT? For example, let's take today's market. I felt that okay, the bullion was down yesterday, and when the market opens today, this margin pressure would trigger selling in the cash market. Now taking that example, if I have shorted a particular stock in the cash market and have not squared off that particular trade on that particular day, so I would have been auctioned today. But the same way, if I have sold Nifty future, or if I have sold a stock future in the derivative market, so I can buy that particular, or I can square up that particular contract today. Now as there is no delivery, there is no scope for auction in the future market, but the auction takes place in the cash market. Trading is done in lots. Now the main reason for making the whole trading done in lot is that it restricts a retail investor to enter into the future market.
Now the logic behind restricting a retail trader to enter in the future market is basically that a retail trader is not capable enough to manage his trades in the future market, and there are huge margin pressures, M2M margin, initial margin on the trader. So he's not perfectly capable to manage his trades in the derivative market. So they have put in a lot size. Very recently, most of you must be knowing that the regulator is planning to eradicate all the mini lots from the derivative contract. Now everybody could have different views. My view per se is that you cannot restrict a bond trader from derivative market just by taking an excuse that we have reduced mini lots. No, this is not enough. A trader who wants to trade in derivative market would take 100 times limit from the broker. He'll fight with the broker and take the limit, and he'll come to the future market. So if the regulator thinks that just by removing the mini lots from that particular market you will safeguard a retail trader, I believe they are living in a dreams world. So any trader who wants to trade in the derivative market would automatically come to derivative market. The only point which the regulator or the exchanges could have done to broaden or to educate more on the options market, because that is the least risky derivative instrument present in the market. Future is a risky market, no doubt it will be a risky market, because if there is no risk, the essence जो हम बोलते हैं मजा नहीं रहेगा बाजार में. 99% of the traders today, I believe, and I know, and most of you investing in the markets trade only because of the feel of adrenaline which you get from trading in the markets. मजा आता है trading करने में. भारत में gambling is not allowed, so stock market is the formal gambling place. So 90% of the traders trade in the markets only because of gambling. So future market is a gambling lovable place. But if you want into the future market, if you want your gambling trades to be right, you have to take a position and you have to drastically and strategically manage your trades. There is a 3-month contract cycle in the future market. So let's say if you are bullish on ACC, or let's say if you are bullish on DLF and you want to long that particular contract. Now here a long means buying. And if you want to buy that particular contract for 3 months, you can go for the last month, and or else you can come in the current month. But what we advise, or rather what I advise for the clients, is they should not trade in the far month contracts, because the liquidity is very less in the far month contract. So every trader should try to trade in the current month contract only, and they can roll over their positions as and when the expiry comes. Now effective trading can be done in index, yes. In fact, 80% of the derivative trade is being done in Nifty future. So that's a fantastic instrument to play. Rather, I would suggest everybody and anybody who is listening to this webinar and who is new to the derivative market, that you should start trading with a index contract, and that too with Nifty future. Because Nifty future has the highest liquidity in the Indian market. You get liquidity even in the farthest month, and you can, a layman can easily predict the Nifty movement. He would have difficulties in predicting the stock movement, because sometimes a stock is being cornered, or a cartel or a syndicate operates in a particular stock, but Nifty cannot be cornered very easily. Brokerage, normally an intraday brokerage that ranges from 0.01 to 0.03 paisa is being levied, and there is a T+1 settlement in the future market, where T+2 is done in the cash market. So these were differences between cash and future market, how the market is different from each other. So anybody who is new to the market can look into these differences and know the differences. Now we'll be coming to the next slide, which says the need of future contract. Now in our lives, anything which comes after a particular phenomena comes only because there is a need. Initially, cash market was there in our markets. Then came the concept of a future contract. Why not to put a contract where it is a trader's paradise? So a contract where there is no delivery, a trader can do an STBT, and everything which a trader loves in a market and only wants to speculate on the direction of the market, future contracts were born. Very low investment required.
Even some brokers allow a margin of 5-10,000 for trading in Nifty, where the normal margin in Nifty is 30,000 rupees. Positional short selling, fantastic concept, and I advise every trader to do not fear themselves when they do a short sell. Traders comes to us, and we have I have talked to many traders who sit in the trading room. They feel like they are born bullish. स्टॉक को शॉर्ट करने में डर लगता है, मालूम है स्टॉक गिरेगा, फिर भी दे फियर दैट द स्टॉक वुड नॉट फॉल, और वो स्टॉक को शॉर्ट करने से डरते हैं. बिलीव मी एंड राइट दिस ऑन अ पीस ऑफ पेपर, अ ट्रेडर who shorts is in 90% more probability to be in profit than from a trader who longs. And if you are a trader who fears from short selling, either stop trading in derivative market, because derivative market is not for you. If you want to play derivative market according to your rules, come on, you are only working for a broker. आप बाजार को अपने तरीके से नहीं चला सकते हैं, आपको बाजार की दिशा में आना पड़ेगा. बहुत जरूरी है मार्केट में, यू हैव टू बी विद द मार्केट एंड यू हैव टू ट्रेड इन द सेम डायरेक्शन द मार्केट्स ट्रेड. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रोल ओवर अपॉर्चुनिटी. नाउ if a trader is trading in the current month, he can roll over, he can virtually create his position for unlimited days by rolling over. Now what rollover is, I'll explain it in a very simple words. Let's say I have 10 lots long in the December contract of Nifty. At the expiry, I know my December contract would expire, and that will not exist from after 29th of December if the expiry is on 29th. What I simply do, I square up my position from the December month and I take a fresh position in the January month. That is known as rollover. You can trade in indices, Nifty, Bank Nifty. There is no delivery obligation. So you can trade, you will be charged a brokerage of intraday, and there will be no delivery obligation. Now the next slide. Now let us understand what derivative market is, some contract specification of the derivative market, and how a particular trader can trade in the derivative market. Underlying contracts, all those contracts which are traded in a derivative market, it could be a stock, it could be an index, come in the derivative market. Every contract has a lot size. Nifty has a lot size of 50, Bank Nifty 25, and so on. So every contract has a lot size. You cannot buy a contract, you cannot buy a single share of a contract. You have to buy that in a bunch of shares. So every contract has a lot size. Now as this is a bet, you have an expiry date of every bet. Initial margin is the margin money which you have to pay, typically 10 to 20% of the contract value. Mark to market margin. Now, mark to market margin is the daily profit and loss. Let's say I bought a Nifty future at 5900 today. Today it ends at 5950. I'll get 50 rupees profit, which is 50 into 50 lots as 2500 profit, which is a notional profit in my demat, in my trading account tomorrow. And if I am in a loss, I have to pay that particular amount. Open interest. Now that's a very simple thing, but I don't know why many retail traders always ask me what an open interest is. They hear this word 10 times on television, 10 times by the traders, and they have seen this word everywhere in the research reports, in the daily derivative reports, everywhere. Now an open interest is how many contracts of that particular, how many contracts are open in that particular underlying. So let's say I say that the open interest of Nifty is 1 crore shares, which means there are 1 crore shares which are yet to be squared off in the Nifty contract. Rollover I've already explained. Ban period. Now every contract has a limit to which the open interest could be formed. So let's say the limit for XYZ share is 10 crore. The day the open interest reaches 9.5 crore, which is 95% of the MWPL, the share is being sent into the ban period. And the ban period, a trader cannot do a fresh trade. He can square up his trade, but he cannot do a fresh trade. So this is a ban period. Now let us move on another slide. Now this is a very informative and an eye-opener slide.
very great words told by Mr. Warren Buffett that derivative are the instrument of mass destruction. What he told in his times when he invested, with all due respect to Mr. Warren Buffett, because he has proved to everybody, I am nobody to say anything about that particular person, that what investment is. He told that derivative are the instrument for mass destruction. Why? Derivative market, or for that matter any market in this world, it could be stock market or commodity market, only one principle works: survival of the fittest. मुझे अगर फायदा हो रहा है तो आपको लॉस करके मुझे फायदा हो रहा है, दैट्स दी बॉटम लाइन. There is no place for emotions in this market, and typically we Indians are very emotional, so that's why, that is the reason the Indians are not making money in the market. So derivative market is an emotionless market. 99% of the traders who come into derivative markets not survive even for 10 days. I have seen traders who come with 10 lakh, 20 lakh rupees, and the whole capital is being eroded in the period of 20 days or 10 days. The reason behind this is that derivative is a two-faced sword. Catch a sword which has two-faced, one face towards yourself and one towards your opponent. If you use that sword in the wrong way, you will cut yourself. Let's see an example. A trader who is bullish on Nifty at 5500. So Nifty is at 5500. He bought one lot at 5500 paying 27,500, which is 10% of the contract. Now if the contract expires 10% down, which is from 5500, it expires at 5000. What will be his payoff? He will lose 25,000, which is almost 90% or 100% of his capital. So अगर, I'll explain this in Hindi also. अगर एक ट्रेडर ने निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट लिया और वो सिर्फ 10% गिरा, कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ 10% की फॉल आई है, बट उसकी कैपिटल 100% चली गई. So this is the reason why Warren Buffett told that derivatives are instrument for mass destruction, because you can buy a sword but you don't know how to manage that particular sword. आप अकाउंट तो ओपन कर लेंगे, डेरिवेटिव मार्केट में अकाउंट ओपन करना बहुत आसान है, मुश्किल है बचना अकाउंट ओपन करने से. आज इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया स्टॉक मार्केट कि मैं अगर बोलूं अकाउंट ओपन करना है वो बहुत आसान है, अकाउंट ओपन करने से बचना आज बहुत मुश्किल है. आप बोलो कि मैं अकाउंट ओपन करने से बच रहा हूं डेरिवेटिव मार्केट में, तो आई सल्यूट यू, बिकॉज ये एक ऐसा, आई टेल यू अ स्टोरी. एक देयर वाज अ केज जिसमें एक एप्पल लटक रहा था फॉर अ एनिमल, टू कैच एन एनिमल. एक बंदर आया, उसने जैसे एप्पल को पकड़ा, गेट नीचे हो गया. अब बंदर अगर एप्पल को छोड़े तो वो बाहर निकल सकता है, मगर उसको एप्पल भी खाना है और रहना भी नहीं है पिंजरे में. तो यही एक रिटेल ट्रेडर जो आम आदमी है, उसे डेरिवेटिव का लड्डू भी खाना है और लॉस से भी बचना है. तो ये दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है. आपको स्ट्रेटेजिकली ट्रेड करना पड़ेगा. यू हैव टू कट डाउन योर इमोशंस. इमोशन को मारना पड़ेगा. तो जब तक आप अपने इमोशन से, ग्रीड और फेयर से बाहर ना आए. ग्रीड और फियर ये एक ऐसी चीज है, एवरीबडी इन दी वर्ल्ड इज अंडर इट्स शिफ्ट. एक ग्रीड है कि आज मैंने 100 रुपए का शेयर लिया है, 150 रुपए हो गया, नहीं वो 200 रुपए होगा, मैं अभी नहीं बेचूंगा. वो ग्रीड इंसान को ले डूबती है. और फियर, 100 रुपए की चीज है, 10 रुपए आ गई है, वैल्यू दिख रहा है मुझे, बट मुझे डर है कहीं 10 रुपए से 2 रुपए ना चले जाए. तो जब तक आप इस ग्रीड और फियर को मैनेज नहीं कर सकते हैं, आप मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते हैं. एक और एग्जांपल मैं हर बार कहता हूं, लेट टेक्नोलॉजी डू योर वर्क. आप अगर अपने आप दिमाग लगाएंगे ट्रेड करने के लिए, तो आप शायद 5 बार सही होंगे, 5 बार गलत होंगे. एट द एंड योर बैलेंस शीट वुड बी जीरो. लेट टेक्नोलॉजी, लेट टेक्निकल एनालिसिस डू इट्स वर्क. आपके चार्ट्स आपको बोल रहे हैं बाय कर लीजिए, एक स्टॉप लॉस भी आपको आपका चार्ट बताएगा, आप स्टॉप लॉस रख के बाय कर लीजिए. स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, लॉस पे करके मार्केट से बाहर आ जाइए. हम एक बहुत अच्छा जोक क्रैक करते हैं मार्केट में कि जो भी आपको लॉस हुआ है वो लॉस नहीं है, मार्केट को सीखने की एक फीस है. अगर मैंने आज 20,000 का लॉस किया है तो मैंने 20,000 रुपए फीस पे की है मार्केट में कि मैं मार्केट को सीखूं.
ये दूसरी बात है कि मैं सीख पाता हूं कि नहीं, या मैं जिंदगी भर फीस पे करता हूं, ये एक दूसरी बात है। बट जो लॉसेस होते हैं वो ट्रेडर को सिखा के जाते हैं कि कल आपको क्या नहीं करना है। हर ट्रेडर, आप इंडिया के किंग की बात करें, राकेश झुनझुनवाला हो, वॉरेन बुफेट हो, या और कोई हो, एवरी ट्रेडर हैज मेड लॉसेस, और उन्होंने ऐसे ऐसे डिसीजंस लिए हैं जो दोज आर ब्लंडर्स, बट फिर भी आज वो सक्सेस हैं बिकॉज उनके लॉस से वो सीख के आगे बढ़े हैं। एक आम आदमी यही नहीं कर पाता है। आम आदमी लॉस करता है मगर उस लॉस से सीख के आगे नहीं बढ़ पाता है, वही लॉस वो दोबारा रिपीट करता है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ बिग ट्रेडर एंड अ स्मॉल ट्रेडर। आज हम कहते हैं कि मार्केट में सिर्फ 2% लोग कमा रहे हैं, फैक्ट है, बिल्कुल सही है कि सिर्फ 2% लोग कमा रहे हैं, 98% लोग खो रहे हैं। क्या बाजार खराब है, या बाजार में पैसा कमाया ही नहीं जा सकता? बहुत लोग बोलते हैं, खास करके वो जिन्होंने जिंदगी बिता दी है मार्केट में, कि शेयर बाजार में पैसा कमाया नहीं जा सकता। ये लोग बोलते हैं। मेरा एक बहुत सिंपल सा सवाल है आपसे, अगर शेयर बाजार में पैसा नहीं कमाया जा सकता तो वो 2% लोग पैसा कैसे कमा रहे हैं जिन्होंने कमाया है पैसा आपसे? आप क्यों नहीं है उस तरफ? वाई आर यू नॉट ऑन दैट साइड ऑफ द टेबल? आप ऐसी क्या गलती कर रहे हैं जो आप प्रॉफिट कमाने वाले लोगों की लीग में नहीं है? बिकॉज कि यू आर नॉट इन द लीग ऑफ दोज हु आर मेकिंग प्रॉफिट। देयर इज समथिंग विच यू आर मिसिंग। Everybody and anybody can make money in the market if he follows his strategy very very easily. शेयर बाजार को सिखाया नहीं जा सकता है पर सीखा जा सकता है। बहुत से एक समझने की बात है कि इसको सिखाया नहीं जा सकता है पर सीखा जा सकता है शेयर मार्केट को। अब वो कैसे, वो हम समझेंगे कि कैसे सिखाया नहीं जा सकता है पर सीखा जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड विच टेल्स अबाउट ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस। एक थंब रूल है जो ट्रेडर्स फॉलो करते हैं मार्केट में, वेयर दे कंपेयर द ओपन इंटरेस्ट विद द प्राइस मूवमेंट एंड दे टेक आउट द प्रोबेबल ट्रेंड ऑफ द पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। सो इफ देयर इज अ राइज इन प्राइस, अगर प्राइस किसी कॉन्ट्रैक्ट का बढ़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, तो ये अज्यूम किया जाता है कि जो लार्ज पार्टिसिपेशन है दैट इज टुवर्ड्स द बुलिशनेस ऑफ द प्राइस। अगर प्राइस राइज हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है, विच मीन्स कि बढ़ते हुए प्राइस में ज्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, द मार्केट इज नॉट गिविंग अ थम्स अप टू द राइज ऑफ द प्राइस। सो देयर कुड बी अ रिवर्सल, दे कुड कम एंड रिवर्स द मार्केट एंड द मार्केट्स कुड गो डाउन। थर्ड कंडीशन इज फॉल इन प्राइस एंड राइज इन ओपन इंटरेस्ट। सो अगर प्राइस गिर रहा है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, विच मीन्स कि गिरते हुए प्राइस को बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मार्केट वुड बी बियरिश। फॉल इन प्राइस एंड फॉल इन ओपन इंटरेस्ट, गिरते हुए बाजार को ज्यादा लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और हो सकता है यहां से बाजार पलटे। सो अगेन दिस इज अ assumption and this is a very thumb rule assumption. It could be right and it could not always be right. So these rules should always be taken with a pinch of salt, that whether you should invest or not invest purely on these fundamentals. I always suggest all my traders that use technology, use technical analysis. It is free. Today you can get the most fantastic softwares free of cost in this country. 90% of the brokers who provide trading terminal, they are giving the technical, world-class technical softwares free of cost. You do not need to buy the highest paid software, which is 99,000, 2 lakh rupees a year. I believe a software cannot make a technical analyst what he is. A normal price movement in any cheapest software, but if the analyst, if the trader knows how to trade, how to take the technical calls, he can trade in the market. Nahi to he cannot do. Now some very key points to remember when you trade in the derivative market. Never over leverage in the future market. A trader, if he has sufficient money, my thumb rule is, if I need 30,000 rupees to trade in Nifty future, until unless I have 40,000 or 45,000 in my pocket, I am not capable enough to trade in the market. If I tell in simple Hindi words, मेरी औकात नहीं है फ्यूचर में ट्रेड करने की।
आई एम साउंडिंग वेरी वेरी क्लियर। अगर किसी ट्रेडर के पास 1.5 टाइम्स की मार्जिन मनी नहीं है, उसकी औकात नहीं है ट्रेडिंग करने की फ्यूचर मार्केट में, आप फिर भी जाएंगे तो आप तैर के निकल के नहीं आ पाएंगे, उस समुद्र में आप और धंसते चले जाएंगे। लीवरेज, अगेन आई एम स्पीकिंग, इज अ फैसिलिटी that should not be taken as a boon for your disaster. आज we have seen many retail traders who fight with their brokers कि मुझे 5 टाइम्स नहीं 7 टाइम्स लीवरेज दीजिए, 8 टाइम्स। मैं कहता हूं आपको जितना लीवरेज लेना है ले लीजिए, लीवरेज से आदमी कभी पैसा नहीं कमाता है, पैसा खोता ही है। जितना ज्यादा किसी क्लाइंट के पास लीवरेज है वो पहली सीढ़ी है कि आप लॉस की तरफ जा रहे हैं। मार्क माई वर्ड्स, never do over leverage in the future market. This is a facility, but retail traders ने उसको बदनाम कर दिया है लीवरेज को। इसीलिए लोग कहते हैं कि कमोडिटी में बहुत लॉसेस, कमोडिटी में बहुत ज्यादा लीवरेज मिलती है। 4%, 2% पे काम कर रहा है ट्रेडर, 1% पे काम कर रहा है। आप 1% पे काम कर रहे हैं, सिल्वर टूटी 3%, 3.5%, आपके मार्जिन यूं ट्रिगर हो गए। आप क्या कर पाए? कुछ नहीं कर पाया, कोई ट्रेडर कुछ नहीं कर पाया जब सिल्वर टूटी तो। सो दी पॉइंट इज, आप जितना ज्यादा लीवरेज लेंगे उतना ज्यादा आप लॉस में आने के आपके चांसेस हैं। कीप अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस वाइल ट्रेडिंग। आपको अगर ये मालूम है कि बाजार में यहां पे मुझे निकलना है, आप सक्सेसफुल हैं। बाजार में एंटर करना इज नॉट डिफिकल्ट, एक बटन दबाना है आप बाजार में एंटर हो गए, बहुत आसान है। बाजार में एंटर होने से बचना बहुत मुश्किल है। इस आदत को लगाना बहुत आसान है, बट आदत से बचना बहुत मुश्किल है। बट बाजार से कब निकलना? मैंने 100 रुपए का शेयर लिया, ये 150 हो गया, कब निकलूं? अभी निकल जाऊं, बाजार बढ़ेगा कि 170 रुपए निकलूं कि 140 हो जाएगा? ट्रेडर 10 टाइम्स ज्यादा टेंशन में होता है जब वो प्रॉफिट में होता है, बल्कि जब वो लॉस तो घर की ही बात है, होना ही है लॉस, आदत है लॉस की, तो हमें आदत है। लॉस से डर नहीं लगता है साहब, प्रॉफिट से डर लगता है। तो अब ट्रेडर को लॉस से डर नहीं लगता है, प्रॉफिट में ज्यादा डर लगता है कि प्रॉफिट हो रहा है, कहीं प्रॉफिट मेरे हाथ से ना छूट जाए। तो प्रॉफिट में कब सेल करना और लॉस में कब सेल करना, क्या स्टॉप लॉस सही है, बहुत क्रिटिकल डिसीजन है। आप स्टॉप लॉस कहां, 5 पैसे से स्टॉप लॉस चूक जाते हैं लोग। 5 पैसे नीचे आया, स्टॉप लॉस ट्रिगर करके 20% ऊपर शेयर, क्या कर सकता है आदमी? कुछ नहीं कर सकता। ये मार्केट है, ये मार्केट है। आप एक दिन खोएंगे, दूसरे दिन कमाएंगे। सही चल रहे हैं तो आप एट दी एंड कमा के निकलेंगे। ट्राई टू क्लियर एक्स्ट्रा लीवरेज पोजिशन इन इंट्राडे। लेट से 30,000 मेरे पास मार्जिन है, मैंने अपने ब्रोकर से लड़के 3 टाइम मार्जिन लेकर के 3 लॉट में काम कर लिया निफ्टी के, जबकि मुझे 1 लॉट में करना था। इंट्राडे ट्रेड में आई शुड स्क्वायर ऑफ, क्लियर माई, फ्लश आउट माई 2 एक्स्ट्रा पोजिशन, बिकॉज आई नेवर नो कल मार्केट क्या ओपन होगा। आज अगर बीजेपी का रिजल्ट उल्टा आ जाता, मोदी साहब का रिजल्ट कुछ उल्टा आ जाता, तो क्या मालूम क्या मार्केट ओपन होता। ओवरनाइट क्या पोजीशन हो जाए, कोई वॉर हो जाए कहीं, कोई क्रूड ऑयल का किसी उसमें आग लग जाए, क्या हो जाए किसी को नहीं मालूम। सो आई ऑलवेज एडवाइज ट्रेडर्स टू इवन कट 100% पोजीशन। इंट्राडे पोजीशन कैरी करना इज द मोस्ट डिफिकल्ट, मोस्ट डेंजरस थिंग। आप 3 बार पैसे कमाओगे, 7 बार पैसे देके जाओगे मार्केट में, दिस इज माई गारंटी। वेरी फ्यू ट्रेडर्स कैन मैनेज पोजिशनल ट्रेडिंग। ट्रेडिंग पोजिशनल इज वेरी डेंजरस। लेके जाना है तो थोड़ी सी पोजीशन लेके जाओ, 10% पोजीशन ले जाओ, क्लियर आउट 90% पोजीशन। 100 शेयर लिए, 90 शेयर बेचो, सिर्फ 10 शेयर लेके जाओ। ड्यूरिंग वॉलेटिलिटी और एन इवन ट्राई टू यूज ऑप्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बट आयरॉनिकली इन दिस कंट्री वेरी फ्यू ऑफ द ट्रेडर्स यूज ऑप्शंस। ऑप्शंस बनाई रिटेल ट्रेडर के लिए है, बट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा है, स्थिति ऐसी है कि ऑप्शन सबसे कम ट्रेडर्स, रिटेल ट्रेडर्स यूज करते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऑप्शंस को समझें। फॉर योर इंफॉर्मेशन, हमारा नेक्स्ट वेबिनार ऑप्शंस का है 26 को, तो आप लोग रजिस्टर भी कर सकते हैं, एंड यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स आल्सो टू रजिस्टर। तो ऑप्शंस को समझें और फ्यूचर में ट्रेड करें, बट ऑप्शंस में ज्यादा करें। 10 में से 9 ट्रेड ऑप्शन में करें, 1 ट्रेड फ्यूचर में करें। फ्यूचर में बहुत मुश्किल है पैसा कमाना। बड़े बड़े लोग थक गए फ्यूचर से कमा के, बड़े बड़े लोग हार गए फ्यूचर मार्केट से। कोई नहीं कमा सकता फ्यूचर मार्केट में, बहुत मुश्किल है, बिकॉज ये गेम ऐसा है।
मैं जितना बोलूं इमोशंस को अलग रखने, बट अगर आज मैं ट्रेड करूं तो आई कैन नॉट सेपरेट माई इमोशंस. दैट इज ह्यूमन, दैट इज ह्यूमन. आप अपने इमोशंस को अलग नहीं रख सकते हैं. मैं खुद आपको ये सलाह दे रहा हूं, बट मुझे मालूम है ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल है आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाए. एंड ट्रेडिंग इन फ्यूचर इज ओनली फॉर हु कैन किल हिज इमोशंस. शॉर्ट एज ऑफन एज यू लॉन्ग. जितना आप शॉर्ट कर सकते हैं. बाजार गिरेगा जरूर. आदमी कब तक खरीदेगा? बाजार में पैसा एक दिन खत्म होगा, बाजार गिरेगा जरूर. उस दिन का इंतजार करो. महीने में 5 ट्रेड करो और सिर्फ उस दिन घर से बाहर निकलो जिस दिन बाजार टॉप पे हो, आपको लग रहा है गिरने वाला है. बाकी दिन आराम से देखते रहो बाजार को, मध्य में पैसा कमाओ. यू विल बी अ किंग इन द मार्केट्स. एवरीबडी हु हैज traded in bear market is a king today. I'll share a simple example. There was a share known as Satyam when it was only Satyam, not Mahindra Satyam. The news came in the morning around 10:30, 11 that the whole Ramalingan Raju, which he accepted, the stock fell from 130 rupees to 20 rupees. There were many traders who made a killing on that particular day by trading in options and who shorted that particular stock. एक साल में 10 साल में आदमी पैसा उतना नहीं कमाता जो उन्होंने उस एक दिन में कमाया शॉर्ट करके शेयर को. पूरे मार्केट में न्यूज आ रही थी रिटेल ट्रेडर्स का पैसा खो गया, रिटेल ट्रेडर नुकसान में है. वो पहलू कोई नहीं दिखा रहा था जो असली पहलू है कि किसने पैसा इतना कमाया. अगर मेरा पैसा खोया है तो किसी ने कमाया, ये बात तो 100% पक्की है. एक ट्रेड अगर हो रहा है तो कोई सेल कर रहा है तो कोई बाय कर रहा है, और अगर कोई बाय कर रहा है तो कोई सेल कर रहा है. तो काउंटर पार्टी को पैसा हमेशा मिलना है, हमेशा मिलना है काउंटर पार्टी को पैसा. डू नॉट वर्क ह्यूजली ऑन रूमर्स. ऑल्दो दिस इज इम्पॉसिबल कि आप रूमर के बगैर काम कर सकें, बट ट्राई दैट यू शुड नॉट वर्क ऑन रूमर्स. फॉलो टेक्निकल टूल्स बिफोर ट्रेडिंग. आज हम कई ट्रेडर्स से बात करते हैं. इनफैक्ट in my last webinar also many traders were asking how to learn technical analysis and how to trade in technical analysis. ट्रेडर हमेशा एक बात हमसे कहता है कि सर हम तो रिटेल ट्रेडर, हम कैसे टेक्निकल एनालिसिस सीखें? बहुत बड़ी चीज है, बहुत मुश्किल चीज है. The easiest thing in stock market is technical analysis. Believe me. टेक्निकल एनालिसिस आप ऑनलाइन सीख सकते हैं. बहुत सारे टूल्स होते हैं ऑनलाइन जिसमें आप जाकर के टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हैं. यू डू नॉट नीड टू नो ऑल 20 इंडिकेटर्स. 3-4 इंडिकेटर्स आप सीखिए, मूविंग एवरेज, ट्रेंड लाइन आप सीख लीजिए. यू विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर योर होल ट्रेडिंग. If you are trading in derivative market, you should learn technical tools or you should follow the technical analysis. Then only you can earn huge in the technical markets. नहीं तो it is very difficult for you to earn in the future market or in, for that matter, in any market. So let the technology take the front seat and let your emotions take the back seat in the markets. जब तक आपके इमोशन मार्केट में है, you cannot earn. Believe me, this is the thumb rule. आपके जब तक इमोशंस हैं जिंदा, आप ट्रेडिंग में पैसा नहीं कमा सकते हैं. So this was all from ourselves on future market, and we told huge things about future market, how to trade in a future market, what is a future market and how can you make money in the future market. Now we are opening the forum for questions. If anybody has the question, there is a question tab in the right hand panel of the right hand side panel, bottom panel of the webinar tool. You can type in your question and you can just send your question to me. I'll be more than happy to answer those questions. So now the forum is open for the questions. Anybody who has the question, who can type the question and I will be more than happy to answer that. So if you have question, you can type in your question, any question regarding the future market or anything which we told in our last webinars or anything about the webinar. I'll be more than happy to answer that particular question. So the first question is that
what is the difference between a future market and an option market? Although we'll be covering the option market in our next webinar, but simply stating, in a future market, you have to pay huge margin money, your losses are huge, and there is a huge leverage, the investments are high, the losses are high. In an option contract, the investments are low, the losses is limited, and even a retail trader who is having 5,000 rupees can trade in an option market. But in future market, you need around 25-30,000 minimum to trade in the future market. Okay. So next question is that is it advisable to carry a loss trade for next day? Okay. There are two, frankly, there are two answers to this particular question, and that's a very good question which you have asked. I would advise first that you should clearly specify yourself whether you are an intraday trader or you are a positional trader. If you are an intraday trader and you have less money to trade in the markets, always put in stop loss. And if the stock has hit the stop loss, you should exit. But what if the stock has not hit the stop loss and you are in the loss? Should you carry forward your loss position? I would say in 99% cases, you should not carry forward your loss position. The reason is there is a huge psychology behind the carry forwarding of that loss. Let's say I have done a trade and I am in a loss of 5,000 rupees on a Nifty trade for intraday. Now, when I carry forward my trade to tomorrow, the duration after the market from 3:30 to the 9 morning, I would have thought about that loss 100 times at least. At least 100 times I would have thought, मैं कल क्या करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसे करूंगा, बाजार आ जाएगा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी. There would be 1,000 different thoughts in your mind before you enter your trade in the morning. And that is the first step of your destruction. When in markets, when you are in a confusion, it is bound that you will make a loss, no matter the markets are in your favorable position. मैंने long किया है, बाजार बढ़ेगा तो भी मैं loss में कटूंगा. This is my personal experience. So I advise every professional trader to never carry forward their loss trades. Do a fresh trade tomorrow. कल बाजार समझ में नहीं आया, take a rest for tomorrow. It is not advisable to trade every day. The best strategy for a trader can take from this webinar is never trade every day. Never trade every day. Take a rest, take a pause. That will give your mind some time to think beyond your own perimeter. So take a pause. बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो भी पॉज लीजिए, बिकॉज दैट इज एबनॉर्मल. किसी ट्रेडर को इतना प्रॉफिट होगा तो वो रिटेल कैसे रहा, कस्टमर नहीं रहेगा वो. सो टेक अ पॉज. अगर बहुत सारे प्रॉफिट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, देन ऑल्सो टेक अ पॉज एंड देन ट्रेड. सो द आंसर इज नेवर कैरी फॉरवर्ड योर ट्रेड. ओके. Okay, good question, and I guess this question would be for many of these guys who are listening to this particular webinar, that I have a number of times I have put the stop loss, but it does not get executed. What is different between rule in keeping a stop loss and trigger price? Although this is a bit technical question, how to put a stop loss trigger नहीं होता है, trigger price क्या है, limit price क्या है, but then too I'll try to explain it in the simplest language which I can. Now in the market there are two kind of orders. One is a stop loss order and one is the normal market or limit order. Let's say a share is trading at 100 rupees. My stop loss is at 97 rupees. If I put an order to sell a contract at 97 now without a trigger price, अभी मेरा contract sell हो जाएगा 100 रुपए में. मुझे एक ट्रिगर प्राइस रखना पड़ेगा. लेट्स से आई पुट अ स्टॉप लॉस ऑर्डर टू सेल 100 शेयर्स एट 97 व्हेन द मार्केट फॉल्स बिलो 97. आई हैव टू मेंशन द ट्रिगर प्राइस एज 97 एंड द लिमिट प्राइस वुड बी लोअर देन 97, which could be somewhere between 96.5 or 96 rupees.
So my trigger price would be 97 and my stop loss price would be, limit price would be 96.5. So, and when I put the order would go to the reserve stack of the order book. The order would only enter the market when the trigger price is the last traded price in the market. जैसे 97 का प्राइस आएगा उसी समय मेरा ऑर्डर सिस्टम में जाएगा और 97 से लेकर 96.5 के बीच में जो भी बेस्ट ट्रेडर होगा वहां भी मेरा शेयर ट्रेड हो जाएगा. So this is how you can put a stop loss order, and I hope this was clear. Although until unless you have a trading screen, you will not be in a good position to understand how to put a stop loss. So I'll suggest that you can go to your broker. If you are an offline trader, you can go to the broker's place terminal and ask him to show you how to put a stop loss order. So if anybody has any other question, they can ask the question. Should you determine difference of 96? Okay, another question on the same stop loss, that how much should be the difference between the stop loss and the limit price. I have a thumb rule for that. If the stock is below 200 rupees, your difference should be in the range of 25 paisa. From 200 to 500, your difference should be between 0.75 to 1 rupee. 500 to 1000 rupees, 1 rupee, 0.75 to 1 rupee again. More than 1000 rupees, your difference should be 1 to 2 rupees का difference होना चाहिए. So this is my thumb rule which I keep when I put a stop loss order. So I hope I have answered the query. This last query, I would like to thank everybody who attended this webinar. And now we'll be ending the webinar. We'll be more than happy if you send your suggestions, queries at webinar@capitalwire.com. Our team would be more than happy to answer those queries. We have a webinar on options coming Wednesday, which is 26th of December. You can register for that webinar through the same link which you used to register for this webinar. So I hope to see you all, and you can definitely forward the link. You can definitely ask your friends to attend the webinar, and we hope this webinar session was helpful to you. Thanks. Thank you.